जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। पत्रकार कवि मिहाई एमिनेस्कू के बारे में जितना जाना चाहे उतना थोड़ा है। पब्लिक आज भी उनको याद करती है 175 साल के बाद भी, क्योंकि उनमें कुछ था। Shidaka Ramuri Batinjam शीशे कुतरे मोर प्लोपी एका मिनते सत्या। अगर टहनियां मेरी खिड़की पर दस्तक दें और कपाए या झुलसाए। क्या बात है। ओ रमई रमई लमीने तेरे मेरे साथ रहो तुम हरदम, मेरे साथ रहो तुम हरदम। रोमानिया के राष्ट्रीय महाकवि के 175वें जन्मदिवस का दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजन वरिष्ठ कवि, प्रसिद्ध पत्रकार और रोमानियन साहित्य के जाने माने विद्वान श्री अशोक कुमार त्यागी द्वारा उनकी अपनी संस्था इंडो रोमानियन कल्चरल एसोसिएशन दिल्ली के तत्वाधान में रोमानिया के राष्ट्रीय कवि मिहाई अमिनेस्कू का 175वां जन्मदिवस दिल्ली विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार त्यागी ने मिहाई अमिनेस्कू के काव्य और जीवन दर्शन पर लेक्चर दिया और मिहाई अमिनेस्कू की कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। इस अवसर पर रोमानिया दूतावास की महामहिम सेकंड सेक्रेटरी मैडम रुक्सांद्रा च्योनेलिया, प्रोफेसर DS कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर मिनी साहनी, प्रोफेसर रूपेन मजूमदार, डॉक्टर प्रतिभा भट्टाचार्य, रविंद्र कुमार, प्रोफेसर रमेश कुमार, डॉक्टर कुश सहित कई जानी मानी हस्तियां विशेष रूप से मौजूद रहीं। His masterpiece. But did not plunge as in former day, and out his heart did cry, oh, what care you all? Still earth shall only earth remain, let luck its course unfold, and I in my own kingdom reside immutably. Out of eternal yesterday into tomorrow's day, even the sun will pass away, that other suns shall. The sun that every morning does rise, at last it splits. For each thing lives because it dies. And because for each thing lives because it dies and dies because it lives. This is. अब तुम मुझको पहले सा मत उठाओ, दिल के दिल ही में रहने। अब तुम पहले सा मत उलझाओ, दिल के दिल ही में रहने दो। अरे सभी मनोहर माटी के पुतले, ये फिर तू हो या फिर मैं। अरे सभी मनोहर माटी के पुतले, ये फिर तू हो या फिर मैं हूँ। माटी माटी ही रहती है, होने को होने करने दो, मुझको अपनी शाही नगरी में यूं ही साथी है। This is it. This is aminesco. Aminesco is aminesco. Aminesco is unique. Unique in every sense. Unique in every sense, as a poet, as a philosopher, as a writer, as journalist, as linguist, as school instructor, as editor, as postman, or as a man, human being, as a lover. Aminesco has his own feelings, his own style of expression, his own thoughts and themes. Beauty, Aminesco has his own feelings, his own style of expression, his own thoughts and themes, beauty, charms, peace. His own love and loneliness, reality and reality. Dreams and desire, his time and dreams, my dear friends.
of the common man who is struggling against the evils and wrongdoings in the society. His poems reveal his sensitiveness, people deeply touched by aminesco's poetry and philosophy. They find their life in his poems, and this is one more reason that I call him people's poet. He is a man of love, beauty and welfare. He loves nature, he loves his nation, he loves his people, and more, he loves the universe. I discovered Mihai Aminescu was deeply, directly influenced, impressed and inspired by Indian ancient literature, philosophy and culture, especially the Hindu Vedas and the Bhagavad. Widely and strongly reflect and the Hindu wisdom modest carving fragments from the tale filled in Poveshte carving first epistle Skrioswar Searadea of course Kuchafru and the Song of Swan's Snow Glosa Ode Shidata, Oramil, my own Sulupa, and Revedere, meeting again, and many more examples, including his great Lucha, Usada Lucha. I call him morning star instead of calling him the evening star. Of his rich poetry, are blended with allusion and references from Indian ancient religion and literary soil. These poems are, and many more poems, a significant relationship with it. Makes us see him, makes all of us see him as a universal poet who dealt with the universal themes of love, nature, longing and mortality, which concerns all great poets of all ages, and basically very lyrical in his poetry, could almost say pastoral, and reminds me of the pastoral poets of the first Romantic period, the Elizabethan age as well as Romantic age, deeply influenced by German philosophy and Romanian folklore to a very great extent. He left a very rich legacy of Romantic poetry, Romanian poetry, which we see the evidence of through the young poets, nature poets in Romania. After that, I want to go to the other poet, Ramadeva. I presume we can translate that as the god of love. And you tell me. Yes. Ramadeva. With the balm of a lover's torment. Romanian folklore, how do you pronounce it? Mionista. What does it mean? Minna. Alright. Narrative poem, kind of ballad, which is about a shepherd, a heroic shepherd, right, who was facing death, right? He was looking towards death, and he incorporated the elements of life within that prospect of death. So, I will read out that poem. You want to read the Hindi version? So, yes, I will read. First, you read first, I use the English one. Okay. Here is near a low foothill at heaven's door, where the trails descending to the plain and ending here, three shepherds keep their three flocks of sheep. One Moldavian, one Transylvanian, and one Frankian. I hope I'm pronouncing it properly. Now the Frankian and the Transylvanian, in their thoughts conniving,
had laid plans contriving at the close of day to ambush and slay the Moldavian. He, the wealthier one, had more flocks to keep, handsome, long-horned sheep, horses, trained and sound, and the fiercest hounds. One small ewe lamb, though dappled grey as tow, while 3 full days passed. So he's feeling something wrong is going to happen. So quotation, ewe lamb, he's talking, the shepherd is talking to the lamb. Ewe lamb, dappled grey, muscled black and grey, while 3 full days have passed, you bleat loud and fast. Don't you like this grass? Are you too sick to eat, little lamb so sweet? Lamb is replying, oh my master dear, drive the flock out near to that field, dark to view, where the grass grows new, where there's shade for you. Master dear, call a large hound here, a fierce one and fearless, strong and loyal, fearless. The Transylvanian and the Frankian, when the daylight is through, mean to murder you. The sheep is talking. Lamb, and he's replying back. Lamb, my dear little ewe, if this omen's true, if I'm doomed to death on this tractor heap, tell the Frankian and the Transylvanian to let my bones lie somewhere here, close by. Where the sheepfold here, so my flocks are near, back of my hut's grounds, so I'll hear my hounds. Tell them what I say. There beside me lay one small pipe of beech with a soft, sweet speech. One small pipe of bone with its loving tone. One of elder wood, fierce-tongued and good. Then the winds that blow would play on them so, on my listening, sheep would draw near and weep. Tears, no blood so deep. How I met my men. Tell them, not a breath, say I could not back tarry, I have got to marry a princess. My bride is the whole world's bride. At my wedding, tell how a bright star fell, sun and moon came down to hold my bridal crown. Firs and maple trees were my guests, my priests. Where were the mountains high, fiddlers, birds that fly, all birds of the sky, torchlights, stars on high. But if you see there, should you meet somewhere, my old mother, little, with her white wool girdle, eyes with their tears flowing, over the plains going, asking one and all, saying to them all, who has ever known, who has seen my own shepherd fight the sea? Slim as a willow tree, with his dear face bright as the milk foam, white. स्वर्ग के द्वार पर पहाड़ी की ढलान पर जहाँ से शुरू होते थे मैदान, रहते थे गणरीय तीन भेड़ों के झुंडों के बीच, एक मोल्डोवियन, एक ट्रांसिल्वेनियन, एक मोरावियन। अपने विचारों के घूम रहे थे ताले हत्या करने की मोल्डोवियन की दीवार पर। वह जो था घनीस, उसके पास की भेड़ें अधिक खूबसूरत, लंबे सींगों वाली भेड़ें, हस्तपुष्ट सदे हुए घोड़े, खूंखार शिकारी कुत्ते। एक छोटी सी प्यारी सी भेड़ 3 दिवस बीत जाने पर भी न कुछ खाती थी,
और नहीं ही कुछ पीती थी, केवल जोर जोर से रंगवाती थी। ऐ मेरी खूबसूरत छोटी सी भेड़, क्या हो गया तुझे? बीत जाने पर भी दिवस दिन दिन, ना तू कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती, केवल रंगवाती है। क्या तुझे अच्छी नहीं लगती है ये घास? क्यों तू रूठी है इतनी, कुछ खा ही नहीं रही सकती? मेरी प्यारी प्यारी छोटी सी भेड़, कुछ तो मुझे बता है मेरे प्यारे मालिक। ले जाओ भेड़ों के झुंड को उस अदृश्य चारगाह की ओर, जहाँ है कोमल नई घास, जहाँ छाया हो तुम्हारे पास। मालिक, प्यारे मालिक, बुलाओ अपने पास एक बड़े शिकारी कुत्ते को, जो है भयानक और निर्भय, अष्टपुष्ट, स्वामी भक्ति के अनुपम, विचारेन और ट्रांसिल्वेनियन हत्या करना चाहते हैं तुम्हारी दिवासन पर। मेरी प्यारी छोटी सी भेड़, यदि यह सत्य है, यदि मुझे मरना ही है, तो इसी स्थान पर कह दे, ट्रांसिल्वेनियन से पड़ी रहने दे हड्डियां मेरी। भेड़ के झुंडों के पास मेरी झोपड़ी के पिछवाड़े सुनता रहूंगा मैं अपने शिकारी कुत्तों को, कहना उनसे जो मैं कहता हूँ। मेरे पास पड़ी है छोटी सी बांसुरी, कोमल मधुर सुर के अक्षरों वाली एक छोटी बांसुरी, प्रेम सुर वाली एक बड़ी बांसुरी, कुछ अच्छे अक्षरों वाली। हवा जब चलेगी वह बांसुरी बजेगी, सुनने आएंगी सभी भेड़ें, पास आएगी, रोएंगी, आंसू बहाएगी। मेरी मृत्यु कैसे आई न बताना उन्हें एक अक्षर भी। कहना मैं विवाह करने गया हूँ एक शहजादी से, अपनी दुल्हन से, सारे संसार की गौरव से। कहना मेरी शादी के मुहूर्त पर हुआ एक अपशकुन, टूट गया एक चमकता तारा, चांद और सूरज आए मेरा सेहरा संभाल ले। देवदार चीड़ के वृक्ष थे मेरे मेहमान, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे मेरे पुरोहित, आकाश के तारे मेरी बारात के साथ जाने वाले जैसे। अगर तुम्हें दिख जाए, अगर तुम्हें मिल जाए मेरी बूढ़ी माँ, सफेद ऊन का लबादा पहने, आंखों से अश्रु बहाते, मैदानों में जाती हुई, हर किसी से पूछती हुई, किसने देखा है, किसने जाना है मेरे गडरिये को, जो सुरों के वृक्ष सा लंबा, जिसका प्यारा चेहरा दूध सा सफेद है, छोटी छोटी मूछों वाला, प्यारे प्यारे आंखों वाला, स्वप्न लाखों वाला। रहम करना छोटी सी प्यारी सी भेड़ पर, केवल कहना इतना ही, मैं गया हूँ विवाह करने सबसे अच्छी शहजादी से स्वर्ग के द्वार पर। मत बताना उन्हें मेरी बूढ़ी माँ को कि हुआ था अपशकुन, गिरा था चमकता तारा मेरी विवाह रात्रि पर। देवदार चीड़ के पेड़ थे मेरे मेहमान, पुरोहित थे मेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पक्षी थे आकाश के तारक। जी, एमिनेस्को की कविताओं पर माना कि आपने बहुत रिसर्च किए हैं, इसके बारे में आप बताइए, आपने कौन कौन सी कविताओं पर इन पे रिसर्च किए हैं? एमिनेस्को के काव्य पे जो उनकी कविताएं हैं जी, मैंने मैंने सारी कविताओं का अध्ययन किया है, उनकी कविताओं का। हर कविता को मैंने पढ़ा है और ध्यान से पढ़ा है, लेकिन मैंने उन कविताओं को लिया है अपनी रिसर्च में जिन कविताओं के ऊपर जो है, जिनसे भारतीयता झलकती है, जिन कविताओं पर मुझे लगा कि इन कविताओं पर वेदों का असर है, जिन कविताओं पर वेदों का असर है, प्रभावित है वो वेदों से एमिनेस्को, या भारतीय संस्कृति से, भारतीय पुरातन साहित्य से प्रभावित है, वैदिक संस्कृति से प्रभावित है, उनको मैंने उसमें लिया है। उनमें 10-12 कविताएं, क्या करीब 15-16 कविताएं हैं उनकी, जिन पे मैंने काम किया है। अच्छा। और मेरे रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं उस पे, जिसका एक टाइटल तो यही है कि इंडियन रूट्स एंड रेफरेंसेस इन रोमानियन लाइफ, लेटर्स एंड कल्चर। एक और है कि एमिनेस्को एंड हिज इंडियननेस। दूसरा है एमिनेस्को रोमानियन बाय बर्थ, इंडियन बाय सोल। ये मैंने इसलिए कहा है कि उसका वो
जन्म से तो रोमानियन है, रोमानिया में जन्म हुआ उसका, हम्म। लेकिन वो आत्मा से भारतीय है, आत्मा से बाहर क्योंकि वो वेदों का है। जी और एक और मैंने उसके बारे में एक और रिसर्च की, उस रिसर्च का जो टाइटल है वो है, मैंने उसको कहा है कि एमिनेस्को जो है वो रोमानिया का तो सूरज है हम्म। और विश्व का जो है वो लुचाफुन है, जो उसकी कविता है उसी का नाम मैंने। थैंक यू सर। रोमांटिक कवि, रोमांटिक पोएट, प्रेम और सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का कवि भी है वो, लेकिन प्रेम और सौंदर्य का, वो विरह का भी है। तो विरह की पीड़ा जो है वो दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। उसकी शादी कहीं और हो गई, एमिनेस्को से नहीं हो पाई। अच्छा, जिससे वो प्रेम करती हाँ, है। लेकिन उसका एमिनेस्को की शादी अपनी प्रेमिका से नहीं हो पाई, अच्छा, और उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती है, कहीं और हो जाती है। अच्छा, कोई बड़ा अमीर आदमी होता है। जी जी। लेकिन हुआ ये कि देखिए कि कितना प्रेम था दोनों में, कि दोनों की मृत्यु एक ही साल के अंदर हो गई। क्या बात है। अच्छा जी, इनकी शादी नहीं हुई थी माइनेस्को की? एमिनेस्को की शादी नहीं हुई, ये उनके साथ ही, बाद में वो जब उसके पति की डेथ हो जाती है अच्छा, तो वो इनके साथ रहने आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा। और लेकिन एमिनेस्को उस वक्त बहुत बीमार होते हैं, जी। वो बड़ी सेवा करती है, अच्छा और एमिनेस्को की डेथ के उसी वर्ष में जी, उसकी भी डेथ हो जाती 89 में। हाँ। 1889 है। वो में। भी ज्यादा टाइम मतलब दोनों एक साथ ही दुनिया से चले गए। अलविदा कहकर चले गए। ये एक तो ये बात है, इसीलिए उसकी उनकी उनकी कविताओं में विरह है। विरह भी है, क्योंकि जिस पे बीतता है उसी को पता लगता है, वही कवि बनता है सर। आप एमिनेस्को की कविताओं का कमाल देखिए आप। वो जो है कविता है, मैं आपको एक छोटी सी मैंने उनको डेडिकेट की है जी। तो वो कविता जो डेडिकेट की है मैंने वो ये है कि मिनट बाय मिनट, तो आई हैव डेडिकेटेड दिस टू एमिनेस्को, एंड दैट इज मिनट बाय मिनट, डे बाय डे, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर, डेकेड बाय डेकेड, decade by decade, एमिनेस्को, बेटा I have dedicated one of my poem to एमिनेस्को, and you see it is very familiar with the Eminesco's poetic work, his philosophy. This is what his philosophy is. What to lose, what to gain. What to lose, what to gain, what to lose, what to gain. Body goes, soul remain. Body goes, soul remain. What pleasure, what pain, all destinies gain. क्या बात। कि क्या आप खोएंगे और क्या पाएंगे. पाएंगे। What to lose, what to gain. अच्छा सर, हमारे दर्शकों को जरा इसके हिंदी में अनुवाद करके बताइए सर। इसमें ये क्या है कि आपको ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है, और ना तो आप कुछ खोएंगे, क्या खोएंगे आप और क्या पाएंगे, और शरीर यही रह जाएगा और आत्मा तो अमर है ही है। और क्या दर्द है, प्लेजर, पेन, गम क्या है, और क्या जो है वो प्लेजर है, आनंद क्या है, ये भी पूछ रहे। ये सब भाग्य का खेल है जी, ये सब भाग्य का खेल है। एक एमिनेस्को को मैंने दो छोटी छोटी और कविताएं हैं जो ये बताती है कि एमिनेस्को क्या है, एमिनेस्को का प्रभाव क्या है जी। तो एक पोएम है कि मिनट बाय मिनट, मिनट बाय मिनट, डे बाय डे, डे बाय डे, क्या बात। मिनट बाय मिनट, डे बाय डे, decade by decade, time flows, एमिनेस्को glows. कि जैसे दिन, मिनट, हर मिनट जितना बढ़ते जाएंगे, जितना दिन पे दिन और दशकों पे दशक समय चलता रहता है, और एमिनेस्को उसके साथ ग्लो कर रहा, और ज्यादा चमक रहा है। Minute by minute, day by day, week by week, decade by decade, time flows, Eminesco glows. Eminesco is what his deep driving desire is, as his desire is, so is his will. As his will is, so is
his deed, and as his deed is, so is his destiny. Aminesco. You see, what is aminesco? Aminesco is what aminesco is what his deep driving desire is. As his desire is, so is his will. As his will is, so is his deed. Or, and as his deed is, so is his destiny. This is aminesco. So aminesco is great. Nothing like aminesco. Aminesco is the last romantic poet of the Europe. जी And Romania is the only spiritual country in the Europe. And it the only spiritual country. And मैं तो कहता हूँ इसको काले सागर का गोरा देश. जी सागर काला है और देश गोरा है. गोरा है। काले सागर का गोरा देश. The white country of the Black Sea. जी और ये एमिनेस्को जो है, ये इसको लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इसको इवनिंग स्टार कहा, शाम का सितारा. मैं इसको कहता हूँ मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा है, जो रात भर जलता है, रोशनी देता है लोगों को और सुबह तक रहता है, जब तक सूरज नहीं आ जाता. क्या बात.